Hi friends and viewers, I am Chef Tanzil. I make recipes from all parts of the world. Please do subscribe and hit the bell icon and don't forget to like. Thanks once again. Today we are going to make tomato concasse or Italian based sauce. ये एक बेस सॉस है जो कॉन्टी किचन एंड इटालियन किचन ये दोनों में यूज होता है। ये सॉस हम इटालियन और कॉन्टी किचन में यूज करते हैं बेसिक पिज़्ज़ा, पास्ता और हर तरह के वेस्टर्न डिशेस में। पिक एंड वॉश द टमाटो। एक टमाटो को अच्छे से साफ कर लीजिए। टमाटो की आंख निकाल लीजिए। मेक क्रिस क्रॉस ऑन द टमाटो और उन टमाटो को बॉइलिंग वाटर में छोड़ दें। ज्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है। एक उबाल आने पर उसके स्किन्स थोड़े ढीले हो जाएंगे तो निकाल देना है टमाटो को। ओवर बॉईल नहीं करना है। नाउ रिमूव द टमाटो and remove the skin. Remove the skin as shown. जैसा आपको स्किन में निकाल रहा हूं उसी तरह से आपको निकालना है। ये देखिए मैंने सब टमाटो की स्किन निकाल के अलग करके रख दिया है और उन टमाटो को मैंने मिक्सर में रफली कोर्सली पीस दिया हूं। पिसा हुआ टमाटो, चॉप ऑनियन, फ्रेश और ड्राई बेसिल, फ्रेश और ड्राई थाइम, ऑयल, शुगर, टमाटो प्यूरी, चॉप गार्लिक, फ्रेश ओरेगानो एंड बे लीफ। चलिए अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं। एक पैन में तेल डाल दीजिए। Add bay leaf, add whole peppercorn, kali miri, add chopped onion, add garlic,